आजकल एक कंसेप्ट बहुत चर्चा में है, थ्यूसिडिड्स ट्रैप। अमेरिकन प्रेसिडेंट जब चाइना विजिट कर रहे थे एंड वहां के प्रीमियर शी जिनपिंग ने ये कंसेप्ट थ्यूसिडिड्स ट्रैप को यूज किया एंड देन इट हैज बिकम वेरी पॉपुलर एंड लॉट्स ऑफ पीपल आर टॉकिंग अबाउट इट। आई थॉट आई शुड एक्सप्लेन दैट टू यू। ये होता क्या है? थ्यूसिडिड ट्रैप्स बेसिकली थ्यूसिडिड्स फिलोसफर थे, इन्होंने अपना स्टडी किया कि जब एथेंस उठ रहा था तो स्पार्टा से राइवलरी हो गई एंड दैट राइवलरी लेड टू ए काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड सीरियस प्रॉब्लम। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एक सेंटर है, बेलफोर सेंटर। उसमें एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर ग्राहम एलिसन। इन्होंने स्टडी किया 16 राइवलरीज को ऑन द बैकड्रॉप ऑफ थ्यूसिडिड्स ट्रैप। एक्चुअली ग्राहम एलिसन ने ही ये शब्द दिया हुआ है और उन्होंने देखा कि दैट राइवलरी लेड टू 12 टाइम्स इनटू वॉर एंड that is when you find that when one power is emerging, the other power in the event of rivalry ends towards going into war, and that is what we call it as Thucydides trap. Chinese premier ने बताया है कि there is enough space for the two big powers to exist. There has been many instances like you know about the Cold War, an example of Thucydides trap. Or you can find a situation where you find the one country when it is rising, the other country who is already here is not happy about it, and then that can lead to conflict and war, and that is Thucydides traps that we have got. In fact, there was a time when there was a bipolar world, then went into unipolar world. A lot of analysts are of the view that America would like to have unipolar world and bipolar Asia, and now probably they interpreted that China would like to have a unipolar Asia and bipolar world. And now we have a situation when there is a multipolarity which India has been always advocating of. But then this concept, Thucydides trap that we have got, this is one concept which explains how the rivalry ends up leading to a war. And then one should try, the countries, diplomats should try to ensure that they do not ultimately result into war and fall into the trap of Thucydides, as they say. I hope you understand the concept.